Hello guys, welcome back. So as we have already discussed about the trunk port, access port, native VLAN, right? DTP. Today what I'm going to discuss, I'm just going to discuss about the spanning tree protocol. तो क्वेश्चन ये है कि what is the purpose of the spanning tree protocol? Why it's required? So STP is going to basically we are using to avoid the layer 2 loop. That's fine. But in this situation layer 2 loop is going to form. First we need to understand कि एसटीपी हमें रिक्वायर्ड क्यों है, कौन सा सिचुएशन में हमारा L2 लूप क्रिएट होगा, राइट? सो सपोज हमारे पास स्विच 1 है, स्विच 2 है एंड वी हैव अनदर स्विच 3. If they are connected like this, switch 1 is connected with the switch 2, switch 1 is connected with the switch 3. यहां पे कोई सर्वर है हमारा, this is the server, and there is some users, user 1, user 2 and user 3. These are the user and this one is the server which has the IP address, suppose 10.0.0.1 and here the IP address is 10.0.0.2, 10.0.0.3 and 10.0.0.4. इस यूजर को अभी सर्वर को एक्सेस करना है तो वी कैन एक्सेस, दे कैन मींस यूजर कैन एक्सेस बाय द स्विच 1, दैट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई. इस सर्वर को ये यूजर यहां से एक्सेस कर रहा है. बट प्रॉब्लम कब होगी? इफ दिस लिंक इज गोइंग डाउन और दिस लिंक इज गोइंग डाउन. अगर ये लिंक डाउन हुआ तो यूजर आइसोलेट हो गए, ये लिंक डाउन हुआ तो मेरा सर्वर आइसोलेट हो गया, कनेक्शन ब्रेक. माइट बी दिस सर्वर इज एक्सेसिंग बाय द आउटसाइड द नेटवर्क. This one is going to connect with the ISP and there is some user or sitting there now and they are accessing this server, right? तो अगर ये लिंक डाउन हो गया तो ये तो सर्वर आइसोलेट हो गया, कंप्लीट सर्विस हमारी इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा, तो हमारा एक मेजर इंपैक्ट आ जाएगा, राइट? सो व्हाट वी नीड अ रिडंडेंसी. हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कनेक्शन बनाए केबल की भाई इनमें से दो लिंक हमारा अप है, अगर दोनों लिंक अप है तो ठीक है, दोनों में से अप है तो ठीक है, ये वाला लिंक को मैं क्या रखूं, एज ए बैकअप लिंक रखूं. बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही हम लिंक क्रिएट करेंगे, नाउ इट विल क्रिएट अ लूप. सपोज दिस वन इज गोइंग टू ब्रॉडकास्ट समथिंग, तो ब्रॉडकास्ट मैसेज कहां जाएगा? इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, और ये ब्रॉडकास्ट मैसेज आपका क्या हो जाएगा, घूम जाएगा कॉन्टिन्यूअसली, राइट? सो इट्स गोइंग टू फॉर्म अ लूप. एक नॉर्मल आर्क मैसेज भी ब्रॉडकास्ट हुआ तो स्विच की प्रॉपर्टीज क्या है, स्विच क्या काम करता है कि एक इंटरफेस से अगर कोई डेटा फ्रेम रिसीव हुआ, उस इंटरफेस को छोड़ के अगर ये ब्रॉडकास्ट टॉपिक है तो रेस्ट ऑल इंटरफेस पे इट्स गोइंग टू फॉरवर्ड. दैट मींस स्विच 2 इधर भी फॉरवर्ड करेगा, यहां पे भी फॉरवर्ड करेगा. सिमिलरली स्विच 1 इधर भी करेगा और स्विच 3 भी इधर फॉरवर्ड करेगा और ये लूप बन जाएगा. दिस इज कॉल्ड द लेयर 2 लूप. अब इस लूप को अवॉइड करने के लिए दैट मींस एसटीपी इज रिक्वायर्ड व्हेन वी नीड अ लूप फ्री नेटवर्क विद रिडंडेंसी, राइट? सो अगर हमें क्या रिक्वायरमेंट है, अ लूप फ्री नेटवर्क विद रिडंडेंसी, देन एसटीपी इज रिक्वायर्ड. अब क्वेश्चन ये है कि पुनीत हमने क्या किया, मैं तो लेता हूं 2-3 स्विच ले लिया, स्विच 1 और स्विच 2 और स्विच 3 और डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, कोई लूप नहीं बन रहा है. ऐसा क्यों? तो भाई एसटीपी इज बाय डिफॉल्ट इनेबल ऑन द स्विच. एसटीपी क्या होता है? बाय डिफॉल्ट स्विच पे इनेबल होता है. अगर इन केस आप कनेक्ट ऐसे कर भी दोगे तो एसटीपी ऑटोमेटिक इनमें से कोई भी एक लिंक को ब्लॉक करेगा. किस लिंक को ब्लॉक करेगा विल डिस्कस. इसमें से किसी भी एक लिंक को ब्लॉक कर देगा. अगर मान लिया सपोज हमारा ये वाला 2 लिंक ब्लॉक है तो अप है, सॉरी ये 2 लिंक अप है तो ये वाला लिंक ब्लॉक होगा. अगर ये 2 लिंक अप है तो ये वाला लिंक ब्लॉक होगा. अगर ये 2 लिंक अप है तो ये वाला लिंक ब्लॉक होगा. एसटीपी ऑटोमेटिकली लूप को डिटेक्ट करेगा और एक लिंक को ब्लॉक कर देगा. तो अगर मैं करंट टोपोलॉजी की बात करूं, इफ वी हैव अ करंट टोपोलॉजी लाइक स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3, यहां पे अगर मैं बात करूं स्विच 1 है, स्विच 2 है, स्विच 3 है, अगर ये 2 लिंक ब्लॉक है तो ये वाला, सॉरी ये 2 लिंक अगर अप है ये वाले, तो ये वाला ऑटोमेटिक ब्लॉक होगा. जैसे इनमें से कोई भी एक लिंक डाउन जाएगा, दूसरा लिंक ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सपोज ये डाउन गया तो ये वाला लिंक ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा,
अप हो जाएगा। क्वेश्चन है कि ये अप होने में कितना टाइम लगेगा, दैट ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू डिस्कस, राइट। टाइम कितना लगेगा, डायरेक्ट लिंक फेलियर है, इनडायरेक्ट लिंक फेलियर है, हाउ द स्विच मींस स्पैनिंग ट्री इज गोइंग टू ब्लॉक द लिंक, राइट, दैट वी नीड टू डिस्कस। तो एसटीपी का बेसिकली जो अभी हम वर्क समझना चाह रहे थे कि वर्क क्या है, काम क्या है, एसटीपी काम क्या करता है। तो एसटीपी इज बेसिकली प्रोवाइड अ लेयर 2 नेटवर्क, लेयर 2 लूप फ्री नेटवर्क विद रिडंडेंसी। अगर रिडंडेंसी हमें नहीं चाहिए तो बेसिकली हमें अगर रिडंडेंसी की जरूरत नहीं है तो एसटीपी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। वी नीड रिडंडेंसी देन वी नीड एसटीपी। तो एसटीपी अगर हम बाय डिफॉल्ट बात करें तो एसटीपी इज बाय डिफॉल्ट इनेबल, जस्ट लाइक भाई रेडियो ऑन करते हैं, रेडियो जैसे ही ऑन करेंगे ऑटोमेटिक वो कुछ तो सुनाएगा, चाहे वो गाना सुनाए चाहे कुछ और सुनाए। अगर उसको अपने हिसाब से हमें सुनना है, कोई पर्टिकुलर सॉन्ग सुनना है या न्यूज सुनना है, तो वी हैव टू ट्यून। सिमिलरली एसटीपी को अगर कुछ मैनिपुलेट करना है तो वी हैव टू ट्यून। सपोज एसटीपी ने किस लिंक को ब्लॉक किया, इस वाले लिंक को ब्लॉक किया, राइट। ये दो लिंक अप है बट आप ब्लॉक किसको करना चाह रहे थे, इसको, तो यू हैव टू ट्यून द स्पैनिंग ट्री, राइट। तो स्पैनिंग ट्री के अंदर हमें जो समझना है, सबसे पहले क्या समझना है, देयर इज वन टर्म्स दैट इज कॉल्ड रूट ब्रिज। दो स्टेप में अगर एसटीपी को समझो तो दो स्टेप में ब्रेक करो एसटीपी को। पहला रूट ब्रिज क्या होता है, दूसरा क्या है, रूट पोर्ट। सबसे पहला इलेक्शन होता है किसका, रूट ब्रिज का। रूट ब्रिज कौन बनता है, जिसकी ब्रिज आईडी सबसे लोएस्ट हो, लोवेस्ट ब्रिज आईडी। और ब्रिज आईडी में दो चीजें आती है, एक आती है प्रायोरिटी और दूसरा होता है मैक। जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी होता है दैट इज 32768, मैक हो गया आपका डिफॉल्ट मैक एड्रेस जो भी हो। इसकी लेंथ कितनी हो गई, 2 बाइट, और इसकी लेंथ हो गई 6 बाइट। दैट मीन्स टोटल जो ब्रिज आईडी का लेंथ होता है दैट इज 8 बाइट। अब हम इस टोपोलॉजी में बात करें, करेंट टोपोलॉजी के अंदर, यहां पे इन तीनों स्विच में से एक स्विच रूट ब्रिज बनेगा। और रूट ब्रिज क्या होता है, रूट ब्रिज विच वन इज गोइंग टू बिकम अ रूट ब्रिज विच हैज द लोएस्ट ब्रिज आईडी दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट। विच वन इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट, दैट मीन्स हम ब्रिज आईडी को क्या, रूट ब्रिज को क्या बोल सकते हैं, इट्स अ रेफरेंस पॉइंट for other switches. And what the other switches will do guys, other switches will try to find out the best path to reach the root bridge. अगर मैं यहां पे बात करूं तो इसकी भी प्रायोरिटी कितनी है, 32768 है। What is the priority guys, 32768, 32768. So all these three switch have a same same priority. तो अगर प्रायोरिटी सेम है, पहले सबसे पहले क्या चेक होगा, प्रायोरिटी। इफ प्रायोरिटी इज टाई, प्रायोरिटी इज सेम, देन आफ्टर दैट व्हाट इट इज गोइंग टू चेक, इट्स गोइंग टू चेक द मैक एड्रेस, दैट इज बेस मैक एड्रेस दैट इज गोइंग टू वर्क एज अ टाई ब्रेकर हियर नाउ। सो व्हाट इज द मैक एड्रेस हियर नाउ, सपोज हियर द मैक एड्रेस इज 0A1B 9C2A 00A1. Similarly, switch 2 have also the suppose 0A1B 9C2A 00A2, and here is also 0A1B 9C2A and 00A3. So this is the MAC address of the switch 3, this is the MAC address of the switch 2, and this is the MAC address of the switch 1. Here what will happen guys, the first of all it's going to check the first digit, it's same. So you can see here up to the 11 digit or same of the each switches. I'm just assuming each switch have almost the same MAC address, only the last digit is different.
So who have the lowest MAC address? Switch 1. Switch 1 have the least MAC address, so that is going to become a root bridge, right? So this is the root bridge. This switch is my root bridge now. Now once the root bridge election is completed, then after that what will happen कि भाई इस स्विच 2 और स्विच 3 इन दोनों से रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए बेस्ट पाथ कौन सा है, राइट? दे आर गोइंग टू सेलेक्ट द रूट पाथ, दैट मीन्स रूट पोर्ट बेसिकली, right? So root bridge, first step you need to understand what is the root bridge, who is going to become a root bridge, what is the criteria to become a root bridge, means switch which has the least bridge ID, that switch is going to become a root bridge. First attribute of the bridge ID, that is the priority. Second attribute is the MAC. If the priority is tie, then after that MAC is going to work as a tie breaker. Then the next step, the root port election, guys. How the root port is going to elect? So guys, first we need to understand port state. How many port states is there? And then port roles. Port state is, first one is disable, second state is blocking, third one is listening, fourth one is learning, and fifth one is, that is forwarding state. So there is 5 states, and how many port roles? So we have root port, we have designated port, and third one is alternate port. So there is 3 port roles and there is 5 port state in the spanning tree protocol, guys. In the spanning tree, how many port states? So most of the people are confused. Alternate port and block port are the same. No. Alternate is the port and their port roles is the block. It's the blocking states and port is alternate port. So that is the role and that is the state. Designated port always will be into the which state? Forwarding state, and root port will be always also will be the forwarding state, right? So there are 5 state and 3 port roles. How it's going to elect the root port, guys, I will discuss in the next videos. How the root port is going to elect. There is a step 2. Step 2 I will discuss in the next videos, guys. Step 1 we have covered what is the spanning tree protocol and how it is going to work, what is the requirement, what is the root bridge, how the root bridge is going to elect, that we have discussed, right? Step 2, that I will discuss root port election process in the next videos, guys. There is some attribute to select the root ports that I will explain in the next videos. Thank you.